Hello and welcome. Welcome to learning session number 4 of chapter number 5 of Algebra, which is probability. So far in this chapter, what all have we seen? We have seen random experiment. So there are three conditions for random experiment, right? The first condition is you should know all the possible outcomes of that experiment in advance. Secondly, you should not be able to predict any outcome. And lastly, all the outcomes should have equal possibility. Okay. Next, we had seen sample space. So it is a set of all possible outcomes of a random experiment. Okay. Sample points are the elements in sample space. Favorable outcome. So if you put a condition on a random experiment, all the outcomes which follow that condition will be favorable outcome. Okay. And an event is a set of all the favorable outcomes. The objective for today will be students will be able to find probability of various events. Okay. So what is probability? So I've told you all, right? We are already using probability in our everyday life. When you say मुझे लगता है कि आज शायद बारिश हो सकती है, right? You are telling a possibility. या फिर I'm definitely going to get full marks in today's test. So that is also a possibility, a probability. So you're anyway using the language of probability in your everyday language. But in mathematical language, when the possibility of an expected event is expressed in numbers, then it is called probability. Okay, मैथ्स में जब तक तुम नंबर नहीं देते उस किसी भी चीज को तब तब वो यूजफुल नहीं होता, right? So whenever you give it a number, it will be called as probability. Okay, what possibilities, when you give possibilities a number in mathematical language, it will be called as probability. Okay, for example, I think I have a 60% chance of clearing this exam, so I've given a number, right? 60%. 60% is 60 divided by 100, right? Or I say I have 100% chance of getting that job offer. So again, I am giving a number, so it is a probability. Okay, it is expressed as fraction or percentage. Okay, so when I used when I used probability in my language, I used a percentage, right? 60% probability, 70% probability. So you can either use a percentage or fraction. Okay, 5 out of 10 times if I write this exam, I'm going to pass it, which means 50% probability, right? 5 out of 10, 5 out of 10 is 5 divided by 10. So either you can write it as a fraction or you can write it as a percentage. In our chapter, we are mostly going to write it as a fraction. Okay, next, for a random experiment, if sample space S and A is an expected event, then the probability of A is P bracket A. Okay, so P bracket A को कैसे read करना है? Probability of A. Okay, where A is an event. Next, what is the formula for probability? You heard they have said, right? You can use a formula to find probability. So this is the formula for probability. So very simple and easy formula. Okay. So numerator में you have number of sample points in event A. Event A क्यों लिखा है? Because you're finding the probability of event A, right? जिस event का probability we are finding, the same event का sample points will come here in the numerator, and denominator will be always number of sample points in sample space. Or if you want in simple words, n of A divided by n of S will be probability of A. Okay, this simple formula you have to use every time to find probability. Okay, so all that we have learned till now, we have learned to find sample space, sample points, how do you write set of events, and how do you find the number of elements in a event, right? All those steps have all those steps also have to be followed now, and you have to just add this one more step of finding the probability using this formula. So only one step is added, everything remains the same. Okay, so now we are ready to solve sums from practice set 5.4. Okay, so this is the first sum. I think there are 5 sums. I could solve 1 or 2 sums for you, and the rest of them you all can solve first, and then you all can check your answers if they're matching with the ones I have written. Okay, so first sum, which was also asked in July 2017 board exam, which was worth 3 marks. If 2 coins are tossed, find the probability of the following events: getting at least one head, getting no head. Okay, so we have solved very similar sums to this, right? But we haven't found the probability. So I'm not going to explain the sample space. The first, okay, before that, solving or rather finding probability of any event has 3 steps. Okay, first step will always be sample space. Second step will be writing the event, and the last step will be probabilities. Sample space and writing the event you all have already been doing for the last 2-3 learning sessions, right?
All what is new here is the last step, which is probability. So first you will write sample space. Two coins are tossed, then you all know the sample space. This is the sample space. We have solved this many times now. I'm not going to explain this. Next, event. Now they haven't given the name to the event, right? They have just said first event is getting at least one head. So you will now have to write what the event is. You have to give a name to the event. Okay. So let me first write, let A be the event of getting at least one head. Okay, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं था कि कौन सा इवेंट है, इवेंट A B C P Q R, तुम लोग को नाम देना पड़ेगा उस इवेंट को. So you write let A be the event of getting at least one head, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया था. Okay, now at least one head यानी या एक हेड भी चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेगा. So two heads is okay, one head is okay, one head is okay, नो हेड्स तो ये नहीं चलेगा. सो पहले तीन एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, 3. Now the last step, which is an additional step to find the probability, is you use the formula. Okay, probability of A is equal to number of elements in A divided by number of elements in sample space, which is 3. Here it's 3, here it's 4. Just substitute and you get 3 by 4. Right? Very simple. You just had to write the formula first and then substitute. 2 steps where you get the answer. You don't have to divide this. Okay, you can keep this as a fraction. I told you all, right? Probability is generally expressed as fractions or percentages. So fraction ही रहने दो, उसको divide करके decimal में answer मत लिखो. Okay, so that's your first question. Second question के लिए again I will start writing the event and then probability. I don't have to write the sample space again and again. Okay, if there is one main question, उसका तुम लोग ने एक बार sample space लिख दिया, you don't have to write it again and again for the sub questions in that main question. Okay, so again give a name to the event. Let B be the event of getting no head. So that's what I'll write. Let B be the event of getting no head. No head यानी सिर्फ tails आना चाहिए. So B will be tails. So number of elements in B is 1. Okay, then again use the formula. Probability of B is equal to number of elements in B divided by number of elements in S. So after substitution you get 1 divided by 4. Okay, so that's your probability. Then write the final answer in pencil box. Probability of A is 3 upon 4. Probability of B is 1 upon 4. That's it. So it's very simple, to be honest. You have already been writing the sample space and the events. The only additional step is writing the probability. Use the formula and substitute in the formula for finding a probability. It's a very simple chapter. Very simple questions come from this chapter. Okay, let's move ahead. Two dice are rolled simultaneously. Find the probability of the following events, and there are 3 events. Okay, so first question was asked in October 2014 board exam, and the last one also was asked in October 2014 board exam. This question can be asked for 3 marks. Okay, October 2014. I gave my board exam in March 2012. तो मेरे एग्जाम लिखने के 2 साल बाद, so काफी very nearby to my board exam. But anyway, okay. So 2 dice are rolled simultaneously. First step is always to find the sample space. We've already found sample space for 2 dice rolled simultaneously long time ago, right? So I'm not going to explain. This will be the sample space. In one of the doubt solving sessions, one student asked me, why do we put commas in between? Why can't we just write 1 1, 1 2, 1 3, 5 3, 5 4, so on and so forth? The reason we put commas in between is अगर 53 लिख दिया, so लोगों को लगे कि I'm writing the number 53, but I'm not writing the number 53. What I'm saying is first die पे 5 number आया, second die पे 3rd number आया. So इन दोनों को differentiate करने के लिए I'm putting a comma in between. Okay, and why are we putting brackets? If I write 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, तो 1 1 और 1 2 के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि 1 1 क्या है, जब पहली बार दोनों साथ में डाइस को रोल किया तब दोनों में 1 आ गया. फिर 1 2 क्या है, फिर दूसरी बार जब डाइस को रोल किया तब 1 2 आया. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? सो या तो 1 1 आ सकता है, या तो 1 2 आ सकता है, या तो 1 3 आ सकता है, so on and so forth. That's why I'm putting a bracket and then I'm putting a comma. Okay, great. So this is the sample space when 2 dice are rolled simultaneously. Now the first event is the sum of the digits on the upper faces is at least 10. Okay, so पहले मुझे इस event का एक नाम देना पड़ेगा. So write the name of the event. Let A be the event that the sum of the digits on the upper faces is at least 10. Okay, sum यानी एडिशन करके कम से कम 10 नंबर आना चाहिए. ओके, सो 1 + 1 2, 10 नहीं आ रहा है. 1 + 2 3, 10 नहीं आ रहा है. 1 + 3 4, 10 नहीं आ रहा है. सो 1 + 6 7 होता है. यहाँ पे भी 10 नहीं आ रहा है. सो फर्स्ट लाइन में कहीं पे भी नहीं होगा.
2 प्लस 6 8, यानी सेकेंड लाइन पे भी कहीं पे भी 10 नहीं मिलेगा, बिकॉज राइट साइड में सबसे बड़े नंबर होते हैं, राइट। फिर 3 प्लस 6 इज 9, सो थर्ड रो में भी कहीं पे भी 10 नहीं आएगा। 4 प्लस 6 10, सो ये आ गया, तो इसको पहले लिख दिया 4 प्लस 6 10। ओके, नेक्स्ट 4 प्लस 5 9, सो फोर्थ रो में और कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट 5 प्लस 6 11, सो इसको लिखूंगा मैं 5 प्लस 6 11, यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट उसके लेफ्ट में जाओ, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 इज ऑल्सो 10, that also I will write it here. Next 5 plus 4 is 9, तो यानी अभी फिफ्थ रो में और कोई भी नंबर को ऐड करके 10 नहीं आएगा। लास्ट 6 plus 6 is 36, सॉरी 6 plus 6 is 12, so 6 भी लिख दिया। देन उसके लेफ्ट में 6 plus 5 is 11, तो उसको भी लिख दिया क्योंकि वो 10 से ज्यादा है। 6 plus 4 is 10, so उसको भी लिख दिया 6,4। so बस इतने ही होंगे और कोई नहीं होगा। ओके, so all these numbers have sum of the digits at least 10, so कितने numbers हो गए? 1 2 3 4 5 6 numbers है total। so number of elements in A are 6। okay, the last step, use the formula for probability and substitute number of elements in A divided by number of elements in sample space। तो हो गया 6 divided by 36, which is 1/6। okay, उसको थोड़ा reduce कर लिया, 6 1 6, 6 6 36, so उसको simplest form में convert करके लिखा है। okay, so we are only done with the first sub question of question number 2। now let us move on to the second sub question। the sample space will remain same। okay, इसको तुम्हें वापस नहीं लिखना है, don't write the sample space again and again for each and every sub question। okay, मैंने यहाँ पे लिखा है so that I have the reference, so that event के elements लिखते समय मेरे पास ये reference की तरह रहेगा, but you don't have to copy this again sample space। okay, so second event, उसका नाम दे दो, let event B be the event where the sum of the digits on the upper face is 33। okay, so ये यहाँ पे लिखा है let B be the event that the sum of the digits on the upper face be 33। okay, so सबसे बड़ा नंबर कौन सा यहाँ पे? 6 plus 6, राइट। दोनों में 6 आ गया, नहीं सबसे बड़े नंबर 6 है, राइट। सो 6 plus 6 12 आ रहा है। सो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई इवेंट है ही नहीं जिसमें दोनों को मिला के 33 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ही 12 आता है ऐड करके। सो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस कैन मैक्सिमम बी 12, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों 6 आएंगे तो 12 होगा। इवेंट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट आ ही नहीं सकता। ओके, सो बी क्या होगा? एम्प्टी सेट, बस ये ब्रैकेट्स डाल देने और बीच में अंदर कुछ नहीं लिखना है, उसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, यानी बी के इवेंट में बी ये इवेंट हो ही नहीं सकता। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है? 0। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? अगेन सब्स्टिट्यूट 0/36, 0/36 will be 0। okay, so that's your second sub question। third sub question, the digit, okay, let me go ahead, yes, the digit on the first die is greater than the digit on the second die। okay, so again let me name the event, let C be the event that the digit on the first die is greater than the digit on the second die। okay, यही सेम टू सेम कॉपी करना है यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट डिजिट का जो नंबर है वो सेकंड से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इक्वल है, ये नहीं होगा, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा। 1 is smaller than 4, 1 is smaller than 5, 1 is smaller than 6, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। सेकंड में है, देखो 2 is bigger than 1, राइट, तो 2,1 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। देन 2,2 इक्वल है, 2 is smaller than 3, 2 is smaller than 4, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। 3,1, ये द फर्स्ट नंबर इज बिगर देन द सेकंड नंबर, राइट, सो 3,1 लिख दिया। सो 3,1, 3,2 भी follows that condition, it's a favorable outcome, why? 3 is greater than 2, so 3,2 भी यहाँ पे लिख दिया। 3,3 इक्वल हो गया, नहीं इसके आगे और कोई भी नहीं होगा, so 3,1 3,2 ये दोनों यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट 4,1, yes it satisfies the condition, 4 is greater than 1, 4 is also greater than 2, 4 is also greater than 3, 4 is equal to 4, तो यहाँ से राइट साइड में कोई नहीं होगा। so 4,1 4,2 4,3, so 4,1 4,2 4,3 आ गया। Similarly, you have to go on doing for each and every sample point। okay, हर sample point के लिए तुम्हें चेक करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर तुम लोग सैंपल्स पे सिस्टमैटिकली लिखोगे तो तुम लोग पैटर्न दिख जाएगा। क्या पैटर्न है कि यह इस ट्रायंगल में जितने भी आउटकम्स है वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इफ यू सी एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ऐसे 2,1 3,2 4,3 5,4 6,5, ये ट्रायंगल में जितने भी आउटकम्स है वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। सो ओनली इफ यू राइट द सैंपल स्पेस
सिस्टमैटिकली यू विल बी एबल टू सी द पैटर्न, या फिर तुम लोग को हर एक सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट को चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. Similarly, keep on doing and you find that total number of elements in event C will come as 15. Then find the probability using the formula. Probability of event C is equal to number of elements in event C, or number of sample points in C, divided by number of elements in sample points. So 15 by 36, again you can reduce it. 3 5s are 15 and 3 12s are 36. Okay. So 5 upon 12. So 3 sub questions they write, first, second, third. So write the final answer in pencil box. Probability of A 1 by 6, probability of B 0, probability of C 5 by 12. Okay. Okay, let's move ahead. So I've solved 2 sums for you all. The remaining 3 sums you all solve by yourself. Okay. I'll wait for 5 seconds for you all to pause the video here and solve the sums by yourself. Okay. Okay, I hope you pause the video and have tried to solve the sum. Unless and until you try and you make mistakes, you won't be able to improve. Okay, सिर्फ copy कर दोगे मेरा सुन के तो तुम लोग सीख नहीं पाओगे. Okay, so make sure you're attempting the sums here from here onwards so that you can understand where you are making mistakes. So I hope you have solved the sums and tried solving the sum at least. Okay. There are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. Okay, 15 टिकट है और हर टिकट पे या तो हर टिकट पे 1 से लेके 15 तक कोई ना कोई नंबर होगा. One ticket is drawn at random from the box. तो उस सारे टिकट्स को एक बॉक्स में डाल दिया और उस बॉक्स में से रैंडमली कोई भी एक टिकट निकालने वाले हैं. Find the probability of the event that the ticket drawn shows even number, and second one is shows a number which is a multiple of 5. तो पहले सैंपल स्पेस लिख दो. व्हाट विल बी सैंपल स्पेस 1 2 3 4 ऐसे करके 15 तक नंबर लिखने. क्यों कि हर टिकट पे 1 से लेके 15 तक नंबर्स है तो ये सैंपल स्पेस हो गया. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 15. नेक्स्ट इवेंट. सो पहले इवेंट का नाम लिखना है. लेट इवेंट ए बी द इवेंट वेयर द टिकट नंबर शोज एन इवन नंबर. ओके, सो यहाँ पे लिख दिया let A be the event that the ticket drawn shows an even number. Okay, so even numbers कौन से 2 4 6 8. Basically what are even numbers? जो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं और 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर नहीं मिलेगा. ओके, सो 2 4 6 8 10 12 14 these will be the numbers. So कितने नंबर्स है? 7 numbers. So number of elements in A हो गए 7. Now use the formula of probability. Probability of A is equal to number of elements in A divided by number of elements in sample space. So 7 by 15 आ जाएगा. Similarly do the second one. Let अभी वापस event को एक नाम दे दो. Let event B be the event the ticket drawn shows a number which is multiple of 5. Multiple of 5 यानी 5 के टेबल में आएगा. So 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा. सिर्फ 3 नंबर. So number of elements in B is 3. And again use the formula for probability. 3 upon 15 आ जाएगा. So again you can reduce this. 3 1s are 3, 3 5s are 15. So 1 upon 5 आ गया. So you can put the final answer in pencil box. Probability of A and probability of B. Okay, so that was your third question. Again I'm going to wait for 5 seconds for you all to try to solve the sum by yourself, and once you're done solving, then again start watching the video and check whether the way you have solved the sum is correct or not. Okay, I'll wait for 5 seconds. Okay, I hope you paused the video and have tried to solve the sum by yourself. Now let us see the answer. A 2-digit number is formed with digits 2 3 5 7 9 without repetition. Okay, so इसका sample space कैसे लिखना है हम लोग ने देखा था, right? पहले 2 से चालू करो. So 2 3 23, 2 5 25, 2 7 27, 2 9 29. So 2 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स आ गए. So 2 से स्टार्ट होने वाले 4 नंबर्स फर्स्ट रो में. फिर 3 2 32, 3 5 35, 3 7 37, 3 9 39. So ये 4 नंबर्स यहाँ पे आ गए. Similarly 5 से 5 2 52, 5 3 53, 5 7 57, 5 9 59. तो ये 5 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स फोर्थ रो में आ गए. इसको सेम रो में क्यों नहीं लिखा है? ताकि थोड़ा सिस्टमैटिक दिखे, राइट? अगर तुम लोग ऐसे ऊपर नीचे लिखोगे तो थोड़ा पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा और फिर इवेंट्स लिखना काफी इजी हो जाएगा. ओके, इसलिए उसको ऐसे ऊपर नीचे लिखा है. तुम लोग साइड में भी लिख सकते हो, बट साइड में लिखोगे तो तुम्हें पैटर्न दिखने में थोड़ा मुश्किल होगा. ओके, तो सिमिलरली राइट द रिमेनिंग नंबर्स. तो इतने सारे नंबर्स मिलने चाहिए. अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, अगर इसमें से एक भी नंबर नहीं लिखा सैंपल स्पेस में तो तुम लोग का आंसर गलत हो जाएगा. ओके, एन ऑफ एस गलत हो जाएगा. एन ऑफ एस गलत हो गया
तो प्रोबेबिलिटी के सारे फॉर्मूलाज में एन ऑफ एस लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो तुम्हारा पूरा सम गलत हो जाएगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द सैंपल स्पेस करेक्टली. ओके, सो 20 नंबर्स तुम्हें इन टोटल मिलने चाहिए. नेक्स्ट, what is the probability that the number formed is an odd number? Okay, so पहले उस इवेंट का नाम दे दो. let a be the event that the number formed is an odd number. तो इसमें से कौन से odd number है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे. okay, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, those are odd numbers. so 23, 25, 27, 29, 32 even number है तो उसको नहीं लोगे. 35, 37, 39, 52 is again even number तो उसको नहीं लोगे. 53, 57, 59, तो again if you can see the pattern, यहाँ पे ये सारे नंबर्स 2 से एंड हो रहे हैं, तो जो कोई भी 2 से एंड हो रहा है वो इवन नंबर है, तो उसको मत लिखो. यहाँ पे सारे नंबर्स या तो 3 से एंड हो रहे हैं या तो 5 से, तो सारे ऑड नंबर्स है. या तो 7 से एंड हो रहे हैं या 5 से, सारे ऑड नंबर्स. या तो 9 से एंड हो रहे हैं या तो 7 से एंड हो रहे हैं, तो सारे ऑड नंबर्स. सो 23 एक ऑड नंबर है फर्स्ट कॉलम में, बाकी कोई भी नहीं है, और बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे. तो टोटल कितने नंबर्स? 16 नंबर्स. ओके, अगर तुम लोग को पैटर्न नहीं दिख रहा दैट्स ओके, फिर तुम लोग को एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, दैट इज ऑल्सो ओके. पैटर्न दिख रहा है तो ठीक है, पैटर्न नहीं दिख रहा है तो यू कैन चेक फॉर ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे इवेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 16 मिलने चाहिए थे. देन यूज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी. probability of A is equal to number of sample points in A divided by number of sample points in sample space, 16 upon 20. So divide this by 4, right? 4 4s are 16, 4 5s are 20. So 4 upon 4 मिल गया. Second, what is the probability that the number formed is a multiple of 5? Okay, multiple of 5 यानी 5 के टेबल में जा रहे हैं. So give one name to that element. Let B be the event that the number formed is a multiple of 5. Okay, so कौन से numbers है? 25 है, next 35, next 75, and last one I think is 95. So 25, 35, 75, 95. Okay, so there are 4 numbers. So number of sample points in B is 4. Use the formula, you get 4 upon 20, which is 1 upon 5. 4 ones are 4, 4 5s are 20, and then just write the final answer. Okay, probability of A is equal to 4 upon 5, probability of B is equal to 1 upon 5. Okay, so that's your question number 4. The last question for this learning session and last question for this chapter is question number 5. Okay, so this is your last chance to solve this sum by yourself. Okay, so again I'm going to wait for 5 seconds for you all to solve this question by yourself, and once you're done solving, once you're done trying, then you can again play the video and check your answers. Okay, I'm going to wait for 5 seconds. Okay, I hope you paused the video and have tried to solve your sum by yourself. Okay, so here a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Okay, so जैसे ही playing cards आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए playing cards में कितने different type के cards होते हैं, and they have asked you to find the probability that the card drawn is an ace and a spade. Okay, so let us see what are the different types of cards in playing cards. So these are the different types of cards, right? First is never, पहला जो होता है कार्ड वो हमेशा A होता है. It's not number 1, it's A. Okay, A here. Okay, then it goes from A 2 3 4 5 6 ऐसे लेके 10 तक जाएगा, and after 10 you have J for Jack, Q for Queen, K for King. Okay, और ऐसे A से लेके King तक 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं. One is hearts, second one is spade, I think that's spade, right? Yeah, that's spade. This is diamond and this is club. Okay, so heart के 13 cards है, next spade के 13 cards है, next diamond के 13 cards है, and club के 13 cards है. Okay, और कोई भी नंबर ले लो, 3. नंबर 3 के कितने कार्ड्स होंगे? हमेशा 4 कार्ड्स होंगे. 4 कार्ड्स फॉर नंबर 3, 4 कार्ड्स फॉर नंबर 4, 4 कार्ड्स फॉर एस, इसको एस बोलते हैं, राइट? 4 कार्ड्स फॉर जैक, 4 कार्ड्स फॉर क्वीन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो अगर टाइप पूछा हार्ट के कितने कार्ड्स है, देन देयर विल बी 13, स्पेड के 13, डायमंड के 13 एंड क्लब के 13. कोई भी नंबर पूछ लिया या फिर कोई भी लेटर पूछ लिया, जे या फिर जैक के कितने कार्ड्स है, ऑलवेज द आंसर विल बी 4. 4 कार्ड्स फॉर जैक, 4 cards for 5, 4 cards for ace. Okay, so now that we know what are the different types of playing cards, now we can solve the sum very easily. Okay, first you will write the sample space, right? So यहाँ पे एक exception है, because I have 52 cards, it will be a huge sample space, right? For this particular example, for this particular
random experiment, it's okay if you don't write the sample space. You can directly write the number of elements in sample space. Okay, but it is applicable only to this one particular example. Okay, even in exam, if they ask you this question, it's okay if you don't write the sample space. Directly number of sample points in sample space लिख सकते हो, only for this example. Next, first event, probability that the card drawn is ace. Okay, so you have to give a name to this particular event. So right, let A be the event that the card drawn is an ace. Okay, ace क्या था, वो A number जो होता है. Okay, A letter जो होता है, A letter के 4 cards थे, right? So number of elements in event A are 4. Again, drawing cards है या फिर प्लेइंग कार्ड्स है, तुम लोग को इवेंट एक भी लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, डायरेक्टली तुम लोग number of sample points लिख सकते हो. Now you can find the probability. Use the formula, you get 4 upon 52. 4 upon 52 will be 1 upon 13. 4 के टेबल में 52 जाता है. Okay, so that's your sum number 1. Next, event of getting a spade. Okay, वापस give a name to the event. Let B be the event of that the drawing. Let B be the event that the card drawn is spade. Okay, and I told you, right, किसी भी टाइप के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स. सो स्पेड के 13 कार्ड्स होंगे. अगेन यू डोंट नीड टू राइट द इवेंट. Okay, directly number of elements in that event you can write for playing cards. Now use this formula and you should get 1 upon 4. Okay, 13 divided by 52. So finally write the final answer in pencil box. Probability of event A is equal to 1 upon 13. Probability of event B is equal to 1 upon 4. So playing cards वाले जितने भी sums है, for that you all should be knowing the different types of cards very well. Okay, कि हर नंबर और हर लेटर के 4 अलग अलग कार्ड्स होते हैं और टाइप ऑफ कार्ड हमेशा 13 होता है. 13 हार्ट के कार्ड्स, 13 स्पेड के कार्ड्स, 13 डायमंड के कार्ड्स एंड 13 क्लब के कार्ड्स. इफ यू नो दिस, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी सम रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स. ओके, so that's it for this learning session. Just check if you have achieved today's learning objective. Students will be able to find probability of various events. So if I give you a random experiment and if I give you 2-3 events related to that random experiment, will you be able to find the probability of that particular event? If yes, then great, you have accomplished today's learning objective. And if not, then you may have to watch this video again, watch other videos related to probability on YouTube, or maybe you could watch it in some other app, or you could ask doubt to your friends, you could ask doubt to your teachers, till you achieve the learning objective. Okay, so that's it for this learning session, and that's it for this chapter. We have completed the chapter. It's a very simple chapter and it's a very scoring chapter in board exam. Okay, so make sure you're practicing each and every sum from this particular chapter very well, so that you can score good marks in this particular chapter in board exam. Okay, board exam पे इस chapter से कोई भी सवाल आया तो उसको छोड़ना नहीं, उसको definitely attempt करना है, and you should get full marks in this particular chapter. Okay, so that's it for this learning session and chapter. I hope you all understood and have enjoyed this chapter, and I hope we'll see each other in the next chapter. Okay, till then, bye and peace.